ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ऋषि। चाय नहीं पीती सर? फिर बिस्किट का चीज इसको तो किसी से कनेक्ट करने नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लोड्स लिमिटेड की जो फिजिकल ईयर 25 की सीबीएस है, उसमें मैं सबसे पहले उसमें जो मैनेजमेंट साइड से उसमें मोहतशिम साहब हैं जो कि सीईओ हैं लोड्स लिमिटेड के, और जो सीईओ है मुबीन साहब। वो एक्चुअली जो मुबीन साहब हैं वो प्रेजेंटेशन वगैरह उसमें नरेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कि कोई भी क्वेश्चन या आंसर होगा तो जैसे ही ब्रीफिंग कंप्लीट होगी देन मीनवाइल क्वेश्चन आंसर्स के लिए फ्लोर ओपन होगा, तो उसमें हम जो रिटन क्वेश्चंस भी होंगे और जो हैंड रेज करेंगे हम उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली उसमें ले लेंगे। सो फर्स्ट वन अभी ब्रीफिंग स्टार्ट होएगी और क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड पे होगा। थैंक यू। मैं उसमें बाबर भाई और उसमें मुबीन भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करें। हम तिलावत से स्टार्ट करते हैं। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Now I pass to Mubin Saab to give you a brief presentation on the public briefing session for the year 2025. Mubin Saab. Bismillahirrahmanirrahim. This is Mubin Akhtar, the Chief Financial Officer of Loads Limited. And now all the participants are welcome to the corporate briefing session for the financial year 2025. The current financial year 2025 was even better, much better in comparison of the previous financial year 2024, because the auto industry especially, was going up and recovering from the phase of recession what they have faced earlier in 2024. And given that Loads Limited is mainly currently in fact mainly dependent on the OEM sales, around 90% or 90% sales of the Loads Limited is from major OEM original equipment manufacturers of Pakistan, mainly Honda, Toyota, and Suzuki. Therefore, we are also grown up with the sales of OEM as well in the year 2025. Lots of please next slide. Next. There's a brief history of the company that we have incorporated in 1979. Onward, we have been listed in Pakistan Stock Exchange on November 1st, 2016. We are mainly engaged in the manufacturing of exhaust system, radiators, and sheet metal components. And the key customers currently are the major OEMs of Pakistan: Toyota, Suzuki, Honda, Hino, Factor, etc. Yamaha was also the key player in the auto sector in previous year 2025. Now they have decided to discontinue its operation in Pakistan
but it was a major customer of Loads Limited in the year 2025. Loads Limited has its own subsidiaries and one associated company, the Tree Corporation Limited. All the OEM, all the subsidiaries and even Loads head office, registered office is situated at Port Qasim. There is the legal status of the Loads Limited, the public listed company. Authorized capital is around 4 billion rupees. Issued and paid up capital is 2.5 billion. The current credit rating is A1 short term and A long term. Next slide, sir. This is the comparative profit and loss statement condensed form of unconsolidated accounts. Of course, the revenue of 2025 has grown up by 34% in comparison of 2024, and accordingly, the gross profit is also increased by 52% in comparison of 2024, and accordingly, the profit before taxation has almost doubled, even more than double of the 2024. EPS was slightly declined in comparison of 2024 due to deferred tax recognition in 2024 on the ECL, on the excessive amount of ECL which has been recorded as per the requirement of IFRS, and current year the ECL amount was even lower than that 2024. That is why EPS has declined slightly 1.97 for the current year. Next slide. This is the revenue comparison of Loads Limited from June 2022 to over 4 years to June 2025. And you can see that in 2022, that was a very good year for the auto sector, and Loads has attained almost 7.7 billion sale in that particular year. And onward, the auto sector was facing some recession due to some even economic and political instability in the country, and foreign exchange crisis, and certain restriction on import from the State Bank of Pakistan. And 23, 24, both of the years were almost facing the same type of issues. And in 2025, the industry started to recover from that recession, and accordingly, Loads has attained again 6 billion sale from 4.4 billion sale in 2024. And onward, for FY 2026, we have also projected a very good sale in 2026, even somehow 30% ahead of 2025. Next slide, sir. Customer-wise sales contribution in financial year 2025, and you can see from this slide that we have 3 major customers, Honda, Indus, and Park Suzuki Limited, and almost their sales contribution was remain same in 2025, and just like the sales contribution was in 2024. The only difference is that their sales volume of all 3 OEMs was increased in 2025. Next slide. The product-wise sales contribution in 2025 is as that our major component, muffler or exhaust system, has contributed around 61% sales, and the second largest component we have sold during 2025 is the sheet metal components, that is around 35%. Radiators market has almost very low, has almost remained very low, that is around 4%. The fact behind that is the all major OEMs have been converted their technology from copper and brass radiator to aluminum radiator, and Loads is manufacturing a copper brass radiator. Therefore, the sales from OEMs was remain low in FY 2025. But in next financial year 2026, we are expecting
more major contribution from radiator component as well. Because we are aggressively capturing the aftermarket of radiator cores and radiator core business. And inshallah, in next financial year, you will see that the radiator core business have also contributed a much significant role in the growth of Lloyds Limited. These are the key ratios of unconsolidated accounts of Lloyds Limited. The gross profit ratio from 22 onward increasing, and current ratio was 171.75% in 2022, then declined due to recession of auto sector. Again, we are getting well and stand at 1.63%. The breakup value of Lloyds Limited is also again increasing, and accordingly, the share price of the Lloyds Limited is also increasing in Pakistan Stock Exchange. The debt to equity ratio is also even more stable in the current financial years in comparison of last few years. Next slide. This is the actually industry major OEMs of the industry auto sector, quantitative sales of their products. Park Suzuki has grown up by 34%, and from currently stand at 72,685 units in comparison of 2024. Accordingly, Indus Motor also grown up by 61%. Honda Artis is also increased their sales by 5,082 cars, and increase is recorded 38%. The overall increase in major OEMs of Pakistan is around 41% during the year 2025 in terms of units, number of cars assembled. The future prospect of Lloyds Limited is clearly shows that our intention that we are going to attend in next year, that is FY 2026. The first one of them is aftermarket segment. We are aggressively catering to increase the sales of Lloyds Limited in local and export market of copper brass radiator and exhaust system. Both. Next. Further, we are also engaged with the new entrants, the new OEMs, for localization of their parts, because their exemption would be end in the financial year 2026, and they have to localize their all major parts or components for avoiding the extra duty on the import of that parts. And for this, the major new entrants have also contacted us, and we are engaged with them for localizing of their sheet metal and exhaust system in Pakistan as well. Aluminium radiator, we have also planned to explore the viability of manufacturing of aluminium radiators for aftermarket and OEMs in the coming years, and inshallah soon we will install the aluminium radiator plant as well in Pakistan. This is the current development that you have already heard in the recent announcement of Lloyds after their quarterly board meeting, that we are going to issue our right shares around 120 million, and for capturing the additional auto sector market and capturing the increasing demand of OEMs for meeting their working capital requirement. And the aggregate amount of the right issue will be around 1.5 billion rupees. Thank you, and we are available for any questions, for answering your questions in this regard. अच्छा, for the Q&A sessions hand raise कर लें, और साथ ही साथ chat box में या Q&A session में अपने आप लोग type ही कर सकते हैं one by one.
I would like to add something in the presentation. So please allow him first to participate in it and add his valuable comments. Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the participants. Thank you very much for joining us. You must have seen this presentation and you must have observed the performance that company has delivered in the financial year 2025. I will just throw some light on the future prospects and our strategic plans going forward that we have elaborated in the presentation. While understanding that our revenue is driven primarily from OEM, we have strategically decided that we must diversify our revenue and must have another revenue stream. For that, we have identified the local market for aluminum radiators and also copper brass radiator. During this current financial year 2026, we are aggressively approaching the aftermarket for a sale of copper brass radiator. The shop that we had, which was lying redundant after the industry have moved on to aluminum radiators. And we expect that during this current financial year, we may fetch a revenue equivalent to 10 to 15% of our revenue from the OEMs, and that will keep moving up in the years to come. Similarly, we are also exploring the new venues to export both the core copper brass radiator and exhaust system as well. Currently, we are exploring UAE and African markets. So that's basically something that we have strategically decided to add another revenue stream to our revenue. So apart from this, we are cognizant of the fact that there are new entrants in the market and Lords having significant experience in developing the parts, both muffler and sheet metal parts. So we are in discussion with new OEMs, and the discussions are primarily initial stages, but we are very hopeful that we will secure some good contracts. Similarly, we are also moving on to aluminum radiators initially to test the market and to test our quality product in the aftermarket. And once we have seen the depth of the market, we will approach OEMs for their demand or meeting their demand for aluminum radiators. So in order to meet these growth avenues, we need growth capital as well. So we have decided to carry out a right issue where we can fetch growth capital from our shareholders, so we can fund all these incremental plans that we have to increase our revenue and thereby creating the shareholder value. So this is what we plan, and inshallah going forward in the years to come, we will see Lords contributing a lot to the OEM market and also creating good value for the shareholders. Thank you very much, and we'll be happy to take questions from the audience. Assalamualaikum. So I have a couple of questions. Please bear with me. So my question first was regarding right issue. So when can we expect the right issue to subscribe and to come and to have this impact? You can tell me. I think tentative timeline is the subscription. Yeah, that will be around mid-January say onward, or we expect कि हम right issue close कर लेंगे somewhere end of February. Inshallah. Okay. So my next question was regarding the part manufacturing. So do you have any local manufacturer? If yes, if local competition, and if yes, so what is their capacity and their market share? किस चीज का competition की बात कर रहे हो? ये local parts manufacturing की. OEMs की के after market की? Both, अगर आप बता दें, comment कर दें. OEM का business थोड़ा different होता है. OEMs में जो part हम बना रहे हैं वो generally हम ही से लेते हैं, उसका कोई competition नहीं होता.
तो OEMs जनरली हैव अ सिंगल सोर्स ऑफ पार्ट, और वो हर OEM को स्पेशलाइज करवाते हैं उस पार्ट में। तो बाय एंड लार्ज सिंगल सोर्स हैं जो 3 लार्ज OEMs हैं, उनके मेन पार्ट्स जो हैं वो सिंगल सोर्स ही होते हैं। सो उसमें एज सच कंपटीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मफलर है वो पाकिस्तान में सिर्फ हम ही बना रहे हैं तीनों OEMs के लिए, उनके हर गाड़ी के हर वेरिएंट और हर मॉडल के लिए। और इसी तरह जो शीट मेटल पार्ट्स हम बना रहे हैं वो कोई और OEM नहीं बना रहा है। इसी तरह जो शीट मेटल कंपोनेंट्स कोई और OEM बना रहा है वो हम नहीं बना रहे, तो उसमें तो एज सच कंपटीशन नहीं है। जहां तक आफ्टर मार्केट की बात है, हाँ उसमें रेडिएटर कोर में बिल्कुल कंपटीशन है, बट वी फील वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड नेम के, और उसमें आफ्टर मार्केट में स्पेस भी काफी है। सो वी आर वेरी होपफुल दैट वी कैन मेक अ गुड एग्रेसिव सेल्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। Okay, thank you. So my next question was regarding gross margin. So recently we have seen the gross margin has really increased. तो आप इसकी वजूहात बता सकते हैं कि क्या कॉस्ट कम हुई या प्राइसेस बढ़ी हैं? इस पे कमेंट कर दें। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। जो आपने खुद ही बता दिया, बोथ हमने कॉस्ट को भी कंट्रोल किया है और सेल्स भी बढ़ी है, फिक्स कॉस्ट कम की है, थोड़ी सी कंट्रोल की है, प्राइसेस में भी हमें कुछ इम्पैक्ट मिला है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉस्ट सेविंग एंड रेवेन्यू इंक्रीजिंग। तो माय लास्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दी शीट मेटल कि अगर जब हम कहते हैं कि एक शीट मेटल, तो व्हाट इज दैट के एक रेगुलर साइज है उसके अंदर से पार्ट्स बनते हैं या फिर हर एक पार्ट के लिए अलग शीट मेटल होता है? इस पे कमेंट कर दें। डिफरेंट शीट मेटल पार्ट्स हैं, डिफरेंट OEMs के लिए डिफरेंट शीट मेटल्स बनाते हैं हम। किसी के लिए कोई रीइंफोर्समेंट पार्ट है, किसी का चेसिस का पार्ट है, किसी के बूट की रीइंफोर्समेंट है। तो डिफरेंट शीट मेटल पार्ट्स हैं, किसी का स्टील का है, किसी का एल्यूमिनियम का है, तो वो डिफरेंट है। नहीं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक शीट मेटल से एक पार्ट बनता है सिर्फ, या उससे मल्टीपल पार्ट भी बन सकते थे? नहीं नहीं, शीट जो है वो तो स्टेनलेस स्टील की शीट होती है ना, या एल्यूमिनियम की शीट है। तो हम हर OEM के लिए मल्टीपल पार्ट्स बनाते हैं, ओके ओके। मल्टीपल तो ला पार्ट्स बनाते हैं OEM के, जो कि उसे बनते हैं स्टेनलेस स्टील शीट से। सही है। तो लास्टली अगर आप एक ओवरव्यू दे दें आफ्टर मार्केट डिमांड पे और उस पे आपकी कैपेसिटी, उस पे अगर आप एक कमेंट कर दें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में हम कोई अप्रोक्सीमेटली, हमारी फोरकास्ट है कि हम कोई 40,000 कोर के करीब हम सेल कर लेंगे, और मार्केट में तो इससे डबल की स्पेस है। तो अभी क्योंकि हमें थोड़ी सी भी वर्किंग कैपिटल लिमिटेशन है, तो इंशाल्लाह ताला अगले साल में ये दूर हो जाएगी, और वी एक्सपेक्ट कि वी कैन ग्रो डबल देन दिस नंबर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अनीस, you can unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चंस होंगे। एक सबसे पहला तो है वो राइट से रिलेटेड है। आई एम इन्वेस्टेड इन योर कंपनी फ्रॉम द वे यू हैव स्टार्टेड टू लिस्ट इन मार्केट। आई थिंक इट वाज अराउंड 2017, so I have seen the ups and downs of the company, but I stay consistent with the company for all those 7 to 8 years. आप पहले मैं राइट शेयर पे जाऊँ उससे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा, मैंने देखा सालों से जो है वो ECL बुक कर रहे हैं 100 मिलियन 150 मिलियन का। तो डोंट यू थिंक दैट इज द राइट टाइम टू जस्ट सेल योर दैट HAWL यूनिट, और जो आप कंटिन्यूसली जो उसको बुक कर रहे हैं उसको क्रेडिट लॉस को, तो वो ख़त्म हो जाए वंस फॉर एंड ऑल? क्या उसके ऊपर फ्यूचर प्लान है मैनेजमेंट के? ओके, आपके तीनों सवाल ले लेके आंसर करके फिर अगला सवाल कैसे आप रेफर करोगे? नहीं, एक एक करके कर लें फिर वो mix हो जाए। ओके, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच फॉलोइंग अप कंपनी फॉर दैट लॉन्ग, रियली अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट। और इसमें ये है कि बिल्कुल आपने सही कहा, हम अलॉय व्हील की सेल के ऊपर और उसकी कि उसको कैसे आगे लेके चलना है काम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऑटो मार्केट ने इसी साल अभी रिकवर किया है, तो लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा अभी आ नहीं रहा, ऑल्दो आ रहा है बट इतना ज्यादा नहीं है। हैविंग सेड दैट, हमारी एक दो पार्टी से बात चल रही है लोकली भी और चाइना में भी,
तो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस और अल्लाह ताला के घर से उम्मीद है कि कोई इसके अंदर बेहतरी हो जाएगी। बट टिल दैट टाइम एज पर रिक्वायरमेंट हमको जो भी स्टैट्यूटरी और फिड्यूशियरी रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी करते रहेंगे इन टर्म ऑफ ईसीएल। ठीक है सर, क्विकली इस पे कमेंट कर दीजिए क्या आपने ये OEMs को एक्सप्लोर किया, क्योंकि उनको भी तो एलआरएम्स चाहिए होते हैं, और वी नो अदर कंपनीज लाइक बलोचिस्तान व्हील और ये अपने ही सब्सिडरी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं एलआरएम्स, एंड बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है उनका, और वी कैन सी द मार्केट प्राइस एवरीथिंग गोइंग वेल। तो आपने इस एवेन्यू को एक्सप्लोर किया OEM से नेगोशिएशन करके कि कोई उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकें एलआरएम्स का? जी जी, असल में क्योंकि हमारा प्लांट अभी कमीशन नहीं है, तो इस प्लांट को कमीशन करने के लिए कोई अभी भी 2.5-3 अरब रुपए की जरूरत है, जो कि अभी हम लोड्स ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती, और बोरिंग करके उसको करना जो है वो बहुत ज्यादा वायबल नहीं है। दूसरा, ओईएम्स की बड़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है इस पार्ट की अप्रूवल के लिए, तकरीबन 2 साल का टाइम लगता है। ओईएम्स बड़ी रिगोरस टेस्टिंग इसमें करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक क्रिटिकल पार्ट है व्हीकल का, तो इसकी क्वालिटी को वो मोर देन 100% इंश्योर करते हैं, और उनका बड़ा हाई स्टैंडर्ड है इसकी क्वालिटी में। तो बिल्कुल वंस द प्लांट इज ऑपरेटिव और हम बनाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद वो हम उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे टेस्टिंग के लिए। उस टेस्टिंग की अप्रूवल के बाद फिर होगा, तो इट्स अ बिट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो कंसिडरिंग के ऑटो सेक्टर और फिर जिस तरह लोड्स रिसेशन से बाहर आ रहा है, तो जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो भी उस तरह नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी 1-2 पार्टी से बातचीत चल रही है फॉर जेवी, तो देखें शायद उसके अंदर हो जाए, फिर हम आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट्स और ओईएम्स को इकट्ठे देखेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, ये राइट शेयर्स के बारे में ये बता दें कि आपका डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान क्या आएगा, क्योंकि जो आपका मटेरियल डिस्क्लोजर पहले आपने दिया, फिर आपने उसको दोबारा रिवोक किया। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन टू रिवोक दैट मटेरियल डिस्क्लोजर। फिर उसके बाद वो इट परसीव्स टू द इन्वेस्टर के आप मोर लाइकली यू आर ट्रेंड टुवर्ड्स टू यूज दैट प्रोसीड्स ऑफ द राइट शेयर अगेंस्ट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो उसके अलावा कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो जो हमने रिवोक किया था वो टेक्निकल इशू था जो पब्लिश नहीं हो सका था। वो एक्चुअली टेक्निकल इशू था वेबसाइट के ऊपर, अच्छा इशू था। तो वो बेसिकली हमने तो अपनी तरफ से अपलोड कर दिया था, बाद में पता चला वो अपलोड ही नहीं हुआ। सो नथिंग रॉन्ग विद दैट, तो दैट वाज प्योरली अ टेक्निकल इशू। सो थैंक यू आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन, ताकि सारों को क्लैरिटी आ गई है। सो नो चेंज एक्चुअली वाज ब्रॉट इन द नोटिस जो कि दोबारा हुआ था, वो सिर्फ री अपलोड किया था हमने। और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि ये हम ग्रोथ कैपिटल के लिए जा रहे हैं। असल में जब हम सेशन से निकल रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि हमारी रेवेन्यू में अभी 36% ग्रोथ है। करंट ईयर में भी हम 25 to 30% की अपसाइड देख रहे हैं अपने रेवेन्यू में। फिर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने ओईएम्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी फिनिश गुड और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। फिर मैंने बताया है कि हम आफ्टर मार्केट में बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। फिर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम एल्युमिनियम रेडिएटर्स को भी एक्सप्लोर करने लगे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमें ग्रोथ कैपिटल चाहिए। सो दिस राइट इशू विल बी यूज्ड टू कैटर ऑल दीज नीड, और ये पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उससे हमारा रेवेन्यू भी इंशाल्लाह जनरेट होगा, मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, तो अल्टीमेटली दैट विल क्रिएट वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है सर, वो क्लियर हो गया। इस पे थोड़ा सा कुछ वाजे कर देंगे कि कब आपका डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहा है जी टुवर्ड्स जी, बस वो उसकी एक स्टैट्यूटरी टाइमलाइन है। इसमें जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो ट्रीट की है। ट्रीट ने अपनी बोर्ड मीटिंग प्लान की हुई है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, जिसमें उनको वो अप्रूवल लेंगे राइट इशू की और अपने यूजीएम का नोटिस करेंगे, एंड देन वी हैव अ स्टैट्यूटरी टाइमलाइन फॉर दैट। सो ब्रॉडली वी एक्सपेक्ट कि हम इसको क्लोज कर लेंगे बाय एंड फरवरी। थैंक यू सर। बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर दो सब पार्ट्स के अंदर है। वो एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो अपने OEMs को सेल कर रहे हैं, आपका मेजर रेवेन्यूज वहां से आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपके साथ OEMs के एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? क्या वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? उनकी क्या म्याद होती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स की? और सेकंड ये कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो उसका मिक्स क्या है? वो आप लोकली कितना सोर्स कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? उसका कुछ मिक्सचर आप बता देंगे कि रॉ मटेरियल का कैसे? यार, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर आस्किंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल इसमें एक्सक्लूसिविटी होती है, और क्योंकि हम ओईएम के लिए हमने हर उनके पार्ट की टूल एंड डाई डेवलप करवाई होती है, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या नंबर ऑफ व्हीकल्स वो अमोर्टाइज होना होता है।
तो वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिविटी होती है। सेकेंडली, हर पार्ट के लिए, हर कंपोनेंट के लिए, हर ओईएम के एक टेक्निकल पार्टनर होता है बैक इन जापान, उसके साथ हमारा अरेंजमेंट हुआ होता है, जो कि हमें टेक्निकली असिस्ट कर रहा होता है उस पार्ट की डेवलपमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस में। और वो फिर जब जो पार्ट हम सप्लाई कर रहे हैं उसका एग्रीमेंट किसी और कंपनी के साथ नहीं है, तो वो भी हमारे साथ ही होता है, और उसके अगेंस्ट हम उसको एनुअल रॉयल्टी भी पे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक्सक्लूसिविटी आती है 2-3 जगह से, और ओवीएम ने इसको बड़ा वाटर टाइट किया होता है इन टर्म के क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो उन्होंने टूल्स एंड डाइस बनाई होती है उसकी अमोर्टाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सर। कुछ इंडिकेट कर सकते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब तक एक्सपायर हो रहे हैं? और दूसरा आपका पार्ट था क्वेश्चन का रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल जो है वो बाय एंड लार्ज हम इंपोर्ट करते हैं, और वो एक्सक्लूसिवली जो ओईएम्स के रिकमेंडेड वेंडर्स हैं हम उन्हीं से लेते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशन इन टर्म ऑफ क्वालिटी और इन टर्म ऑफ सप्लाईबिलिटी उनसे रहती है, इंश्योर रहती है, तो आगे ओईएम को भी अपनी क्वालिटी इंश्योर करने में आसानी रहती है। सो मोस्टली ओईएम रिकमेंडेड वेंडर्स हैं जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारी इंपोर्ट प्राइमरीली कोरिया, जापान और चाइना से है, जो कि ओईएम्स के रिकमेंडेड है। Okay जी, thank you very much sir for your time and your answers. Thank you. Thank you. जैफा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी क्वेश्चन जो है आपसे ये ईसीएल के बारे में ही था कि you have a cumulative ECL of around 2 billion till June 2025, right? So can you give me an absolute number? How much is it? How much of it is remaining to be recorded? Because I'm assuming all of it will be recorded as a loss on your books, and it is a significant part of your profits. जी जी, So ये ईसीएल जो है प्राइमरीली जो हमने अपनी सब्सिडी को लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो मार्कअप हम चार्ज कर रहे हैं उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो डिपेंडेंट है कि लोन कितना रह गया है और मार्कअप रेट क्या है। एब्सोल्यूट नंबर देना जरा वायबल नहीं है। हाँ, और वो पीएनएल में हम नॉक ऑफ कर लेते हैं इनकम और ईसीएल को, तो उसका बेसिकली अनकंसोलिडेटेड जो हमारे अकाउंट से लोड्स हैं उसमें कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। वेल, इम्पैक्ट इन टर्म ऑफ के एक तरफ मार्कअप इनकम आ रही होती है, दूसरी तरफ वो ईसीएल शो हो रहा होता है। सो द अकाउंट्स ऑफ लोड शो वेरी फेयर पिक्चर। ठीक है। You also mentioned that you are trying to get into the aftermarket. So do you think it will have an impact on your working capital, or the receivable position will be impacted? We will have a significant impact on our working capital, इसीलिए हम राइट इशू कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के लिए इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। और बिल्कुल, और इसमें मजेदार बात यह है कि दिस आफ्टर मार्केट इज जनरली कैश ड्रिवन, तो ये अपफ्रंट एडवांस कैश पे काम होता है। बड़े जो डीलर्स हैं उनका कोई थोड़ा बहुत क्रेडिट होता है, बट बाय एंड लार्ज इट्स कैश बिजनेस। कैश बिजनेस से मुराद ये है कि वी गेट एडवांस पेमेंट। Okay. Also, can you tell me if anything happens on the front of high-tech alloy wheels, कि आपने उसे कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं कि वो बिक जाए, तो can you give me an estimated valuation of high-tech alloy? यार, हम कोशिश करें वो बिक जाए। मैं अनफॉर्चुनेटली आपको उसकी वैल्यूएशन नहीं दे सकता क्योंकि हम नेगोशिएशंस में हैं। सो दैट्स समथिंग वी वुड लाइक टू रिमेन विद अस। तो इंशाल्लाह जब कभी कोई डील फाइनल होगी तो हम मटेरियल इंफॉर्मेशन जब देंगे तो उसमें पूरी डिटेल देंगे इंशाल्लाह। Okay, thank you. कामरान अहमद। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने बोला है कि आप कॉपर जो रेडिएटर से आप एल्युमिनियम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका कितना टाइम फ्रेम लगेगा सर? ये कब तक जो है ये आप कंप्लीट हो जाएगा? ओके, इसमें यह है कि हमारा अभी जो प्राइमरी फोकस है वो तो कॉपर ब्रास के ऊपर ही है। आफ्टर मार्केट में हम अभी आफ्टर मार्केट टेस्ट कर रहे हैं एल्युमिनियम के लिए एक
नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी के साथ हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जस्ट टू चेक द डेप्थ ऑफ द मार्केट विद रिस्पेक्ट टू आवर क्वालिटी। उसके बाद और इसकी 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 कॉस्टिंग और प्राइसिंग सारी ताकि हम इसको एक वायबल प्रोडक्ट बना सकें। वंस वी हैव कॉन्फिडेंस के हमारा प्रोडक्ट रिलायबल है, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है, तो उसके बाद ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन टू इंक्रीजिंग द क्वांटिटी इन द आफ्टर मार्केट एंड साइमल्टेनियसली हम कोशिश करेंगे कि हम ओईएम्स को अप्रोच कर सकें और उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकें। तो सर इस साल what we're talking about is probably a year plus. अच्छा अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताएं सर, देखें ग्रेजुअली चाइनीज जो है ना वो ऑटोज जो है ना वो मार्केट को कैप्चर करते जा रहे हैं और जापानीज जो है ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहे हैं, तो इस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट है आपके, और कोई इंक्वायरी वगैरह हो तो चाइनीज वेंडर जो लोकली यहाँ पे कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल है और बड़ी सिग्निफिकेंट है। कुछ वेंडर्स हैं, कुछ चाइनीज ओईएम्स हैं जिन्होंने हमारे से रब्ता किया है, कुछ को हम प्रोएक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं। देयर इज अ मिक्स ऑफ थिंग, बट आपको पता है बाय एंड लार्ज जो चाइनीज हैं दे आर इनटू देयर हनीमून पीरियड एट द मोमेंट। कुछ फ्यू चाइनीज हैं जिनका वो ड्यूटी एग्जम्पशन खत्म हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। और हैविंग सेड दैट जो नए भी हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल कि वी कैन लॉक सम ऑफ द डील्स विद देम। अच्छा, फिर आखिरी सवाल है वही सर, हाईटेक अलॉयड के हवाले से। लास्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बाना साहब ने बताया था कि हमारी मशीनरी जो है वो तकरीबन आ गई है और हमारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। खैर है उस एट दैट टाइम वाज कोविड एरा, तो अभी आपके पास मशीनरी वगैरह आ गई है सर या अभी वो सब कोरिया में ही पड़ी हुई है? नहीं नहीं, हमारे पास मशीनरी तो है। कुछ मशीनरी आने वाली है जो नहीं आ सकी थी क्योंकि कोविड की वजह से लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। बाय एंड लार्ज मशीनरी तो है हमारे पास, बट वो कमीशन नहीं है प्लांट जो है। अच्छा, कह रहे कि मेरा सवाल जो है ना वो ये है कि सर अगर कुछ मशीनरी अभी भी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब फिर आप उसको इंपोर्ट करेंगे ना सर, वो तो फिर आपको मजीद इन्वेस्टमेंट उस एड में चाहिए होगी, या आप इसको एज इट इज ही किसी को दे देंगे या जॉइंट वेंचर में चले जाएंगे? नहीं, अगर हम जो देखिए दो ऑप्शंस हैं। एक है ऑल आउट सेल, वो एज इज बेसिस पे है। जितना इक्विपमेंट है, जो लैंड एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, वो एज इज बेसिस पे है। उसके बाद फिर जो फर्दर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो कर लेगा। अगर हम जेवी पे जाते हैं तो उसमें भी हमारी कोशिश है, मतलब जाहिर है इक्विपमेंट तो चाहिए, तो बेसिकली उसमें भी ये है कि जो इन्वेस्टर आएगा वो हमारा प्लान ये है कि पैसा हाईटेक में ही आए और वहीं पे हम जो रिक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी है उसको चलाएं, इक्विपमेंट खरीदें और उसको अपन रनिंग करें। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव तो प्लांट चलाना है, चाहे वो हम जेवी के साथ चला लें या अगर कोई खरीद के चला लें। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि शेयर होल्डर्स के लिए कोई अच्छी खबर, कब तक कंपनी जो है ना वो डिविडेंड या बोनस की तरफ आ सकेगी? यार हमारी तो कोशिश है कि हम बहुत जल्दी आ सकें, लेकिन थोड़ा सा जो हमें बॉकडाउन कर रहा है वो ये हमारा हाईटेक है। इसकी अगर हमारी कोई डील हो जाती है तो इंशाल्लाह यू विल हियर गुड न्यूज वेरी सून, बट नेवरदीलेस दिस इज नॉट स्टॉपिंग अस फ्रॉम क्रिएटिंग अ गुड वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। बस अब दुआ करें कि हमने जो रेवेन्यू की डाइवर्सिफिकेशन और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं वहां से हम अच्छे मार्जिन ले सकें और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके, मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव रहें, और अगर इंडस्ट्री भी पॉजिटिव रही तो यू विल हियर गुड न्यूज वेरी सून इंशाल्लाह। सर बस ये बताएं कि देखिए ना, इस वक्त तो मार्केट में जिस हिसाब से जो आईपीओस पे जो प्रीमियम चल रहा है, तो सर ये ऑप्शन आपके जहन में क्यों नहीं है आप इसको, इसका आईपीओ लाके इसको मार्केट में आप लिस्ट करा लें? क्योंकि सर इस वक्त तो बहुत मार्केट के अंदर जो जो इन्वेस्टर्स की डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा है। हमने देखा है सर यहाँ पे तो 10-10 रुपए के आईपीओ जो है ना सर वो 40-40 रुपए में गए हैं, तो इस ऑप्शन पे क्यों नहीं आप गौर करते सर? यार हमने इस ऑप्शन पे गौर किया था इनिशियली, और हमने एक आईपीओ प्लान भी किया हुआ था हाईटेक का इनिशियली जब ये हमने प्लांट लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। इस वक्त असल में बात यह है कि कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान भी हो, आगे डिमांड भी हो और नजर भी आ रहा हो लाइबिलिटी के लिए। जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि इसकी बड़ी रिगोरस टेस्टिंग है,
अगर हम आज भी कुछ इसका IPO करके जाते हैं और 2-3 साल लगते हैं OEM से अप्रूवल लेने में, तो 2-3 साल का लॉस फिर बुक करना पड़ेगा। तो वो हमारी इस वक्त प्रायोरिटी है लोड्स के ऊपर, ताकि हम लोड्स को जो है वो स्टेबल कर सकें, इसकी रेवेन्यूज की सस्टेनेबिलिटी का, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की सस्टेनेबिलिटी का, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उसकी एटलीस्ट लोड्स में वैल्यू क्रिएट कर सके, अलॉन्ग विद के हम हाईटेक के ऊपर भी प्लॉजेबल चीज ले आए। तो IPO में हम समझते हैं कि इस वक्त वेरी ऑनेस्टली हम शेयर होल्डर्स को कोई कॉन्क्रीट चीज दे नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम उसको कोई फॉल्स उसके ऊपर लेके आना नहीं चाहते, फॉल्स फुटिंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Then please unmute yourself. Assalamu alaikum. I just have one question regarding the loan that is being given by the director, amounting to approximately 700 million. Do you guys have any plan to repay this loan? जी, ऑफ कोर्स वी हैव टू रीपे, पॉसिबल ही नहीं है कि वापस ना करें, तो वी डू हैव। Obviously, but how long do you expect this loan to be carried forward? I think we will be able to repay it partially in the current year, or maybe full on an installment basis, depending upon how quickly we can generate cash from the aftermarket. So technically, fiscal year 26, you should be done with half the repayment. उम्मीद तो है जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। Okay, inshallah. Thank you. Thank you. जितने भी हैंड रेस थे उनको तो हमने कैटर कर लिया। कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में हैं तो वो ले लेते हैं। Sure. सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि ऑटो सेक्टर में हमने फर्स्ट 4 months ऑफ फिस्कल ईयर 26 में 38% की ग्रोथ देखी है, तो मूविंग फॉरवर्ड फुल ईयर की आप क्या ऑटो सेक्टर की ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी? बेसिकली हमारे पास जो एक इसमें कोई अथेंटिक नंबर नहीं है, व्हाट वी कैन डिडक्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 25 to 30% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लास्ट ब्रीफिंग में जैसे आपसे इनकी डिस्कशन हुई थी तब बताया गया था कि मेजर OEM के साथ ऑनबोर्डिंग की नेगोशिएशंस चल रही हैं, बट उस वक्त ऑटो पॉलिसी एक्सपायर होने में थोड़ा सा टाइम था। बट अब जून करीब है जिसमें चाइनीज और काफ़ी अदर प्लेयर्स की ऑटो पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, और जैसे कि आपने प्रीवियसली बताया कि ऑनबोर्ड करने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि पार्ट्स को उनके जो पेरेंट कंपनीज है वहाँ से कॉन्फ़िगर कराया जाता है। तो अब तक कोई इसमें मेजर डेवलपमेंट नहीं है किसी पार्टनर के साथ? नहीं जी, है डेवलपमेंट, लेकिन अभी वो ऐसी नहीं है कि डिस्क्लोज की जाए। इंशाल्लाह ताला जब हम कोई ऐसी चीज मटेरियलाइज करेंगे तो उसका हम प्रॉपर डिस्क्लोजर देंगे। मतलब हम कुछ के साथ इनिशियल स्टेज पे है, कुछ के साथ हम एडवांस स्टेज पे हैं, तो इंशाल्लाह जब हमारा कोई इसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होगा तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्क्लोज करेंगे एज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज कि सिंस वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और बेटर फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर की भी आपके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखी गई है, तो मूविंग फॉरवर्ड ग्रॉस मार्जिन से रिलेटेड क्या एंटिसिपेशन होनी चाहिए? हमारी कोशिश है जिसको फर्दर इंप्रूव करें और एटलीस्ट यहाँ पे मेंटेन करें, लेकिन कोशिश है कि इसको इंप्रूव करें और जितना बेहतर कर सकें, जितना हम प्रॉफिट अच्छा कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मच पोटेंशियल डू यू सी इन द एक्सपोर्ट मार्केट? जी, एक्सपोर्ट मार्केट में हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि कोई समथिंग अंडर 100 मिलियन रुपीस के अराउंड कोई एक्सपोर्ट कर सके, बट एक्सपोर्ट का प्रोसेस थोड़ा जरा लंबा है, अप्रूवल्स टाइम लेती हैं, तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसके करीब कुछ कर लेंगे। Next one is how much revenue contribution you are expecting from copper radiators in the next 3 years? Sales mix का basically portion कितना आप expect कर रहे हैं कि copper radiators से होगा? जी, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अभी इस साल तो हम कोई अराउंड 15% के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, और वी सी अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन दैट गोइंग अप टू 35-40% ऑफ आवर OEM रेवेन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 years. So I think majority of the questions हमने आंसर कर दिए हैं, और बाकी हाईटेक वगैरह से रिलेटेड है जो कि डिटेल में आपने एक्सप्लेन किए हैं। तो किसी और पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख दे या हैंड रेज कर दे, else we can end the session.
एक हैंड रेज हुआ है तो उनको मोहम्मद सकलैन अपन भी करें। Assalamu alaikum. Am I audible to you? जी 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 प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल में सभी आंसर दिए। बस एक चीज पूछना चाह रहे थे कि आपका रेवेन्यू मिक्स शीट मेटल से कितना आता है, रेडिएटर से कितना आता है, अगर आप ये बता दें काइंडली। हमने स्लाइड दिखाई थी, दोबारा दिखा देते हैं, आप जरा ये देखें। 35% शीट मेटल। तकरीबन ये आप जो स्लाइड देखें इसमें आपको आइडिया भी हो जाएगा। हमारा तकरीबन 35% रेवेन्यू जो है वो शीट मेटल से आता है। ये आपको दोबारा स्लाइड दिखा देते हैं। अच्छा, फॉर सम रीजन वो शेयर नहीं हो रही, लेकिन आंसरिंग योर क्वेश्चन इट्स 35% कमिंग फ्रॉम, ये देख लें आप इसमें आगे, ये देख लें आप इसके अंदर तकरीबन 61% मफलर से आ रहा है, 35% जो है वो शीट मेटल पार्ट से आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। So I think the majority of the questions have been answered and नोट्स की टीम की तरफ से काफी डिटेल प्रेजेंटेशन थी और पार्टिसिपेंट्स से भी काफी डिटेल क्वेश्चंस पूछे। So we would like to thank all the participants for joining us and नोट्स की मैनेजमेंट एज वेल। आप लोग की तरफ से अगर कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हो। But thank you very much for everyone showing interest in our company. We value your time and we value your interest as well in our company. Our primary objective is to create shareholder value and to improve our revenue stream, thereby improving our margins and profit. And we try to become a good dividend paying company in times to come, inshallah ta'ala, but we have some hiccups or strings attached जिसे हम जल्दी resolve कर लेंगे in term of high-tech alloy wheel. तो बाकी thank you very much जी for your interest in our company. Thank you. Thank you. Thank you. Record